हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में अपन ने आर्टिकल 29 स्टार्ट कर दिया। आर्टिकल 30 बचा हुआ था। तो आर्टिकल 30 और देख लेते हैं, इसके बाद अपन पढ़ते हैं आगे, है ना। तो आर्टिकल 29 पहले लेट्स रिकॉल अबाउट आर्टिकल 29। सो आर्टिकल 29 एंड 30 both talks about cultural and educational right. So basically article 29 and 30 both are article talking about cultural and educational right of the citizen. Now let's read article 29 first. We have already discussed. Article 29 talks about protection of interest of minority. How? So we have discussed article 29 clause 1 is talks about any section of the society. So basically any section of citizen of India have right to conserve their language, culture, and protect them. So basically, Article 29 clause first says that any section of citizens of India have right to conserve their language, their culture, and also have the right to protect them. So that is the basically mentioned in Article 29 clause 1. We have already discussed. Sections basically mean minority. Minority with respect to language, minority with respect to religion. So any section of the citizen of India have right to conserve, basically कोई भी citizen हो वो अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का अधिकार रखता है और उसको कंजर्व और प्रोटेक्ट करने का भी अधिकार रखता है. So that's are basically mentioned in Article 29 clause 1. Now let's read about Article 29 clause 2 of the Constitution of India. Then we will move forward. So Article 29 clause 2 says about no discrimination in admission with respect to admission in educational institution receiving any type of fund by government on basis of race, caste, and language. So basically, Article 29 Clause 1 2 says that with respect to admission in any educational institution, no discrimination will be happen if educational institution is funded or partially funded or getting any type of fund by government of India or getting any type of public fund by the public. So if they are getting, then then state can interfere in it. And you have clearly mentioned, there is clearly mentioned that the ground sex is missing, so state can discriminate on the basis of sex. Basically they can discriminate, they can make extra schools, they can discriminate to the men because uh, we have already seen that many institutions are reserved only for girls, so they can discriminate on the basis of men and women or the sex basis. Now we have discussed article 29 clause 2 and 29 clause 1. Basically article 29 clause 1 says any section of citizen have the right to protect their culture, to protect their
language to protect their ethnicity, and also have the right to protect them and also have the right to conserve them. And Article 29 Clause 2 says that no discrimination while taking admission in any educational institution which is funded by government or partially funded by government. So this is mentioned in the Article 29 of the Constitution of India. Now discuss about Article 30. So what the Article 30 says, first read it, because here till there I have discussed. Right now we will be moving forward. So right of minorities to establish and administer educational institutions. So basically Article 30 have two clauses. Article 30 clause 1 states, Article 30 states minority educational institutions. So it's talk about minority educational institution. How? Let's read. It says that all minorities, whether based on religion or language. So basically in this article they have talks about minority on the basis of language, on the basis of religion. So only these ground. So minority on the basis of language shall have the right to establish and administer educational institution of them. So on the basis of religion and linguistic minority, they have right to establish and maintain educational institution of their own choice. Therefore, this is the tool given to minority to achieve objective mentioned under Article 29 Clause 1. So basically Article 30 talks about every minority, whether based on language, whether based on religion, have the right to establish their institution, to regulate their institution, administer their institution on their own choice. That's basically state will not interfere in it. Therefore, this is the tool which is given to the minority institution to promote their, to conserve their, to protect their language and culture, which has been mentioned in Article 29 Clause 1. Now, who will decide minority status, whether on the language, whether on the religion? So, before discussing it, let's discuss one more thing. What is the advantage which has been got by after getting the minority educational institution? So, what is the advantage of minority educational institution? So if any institution is recognized as the minority educational institution, so therefore they enjoy more autonomy with respect to or compared to other institution, other educational institution. So if any institution is recognized as minority educational institution, then they enjoy more autonomy. Basically they enjoy more autonomy while comparing to any other institution, as any other educational institution. Now, and also they are permitted to provide reservation of specific minority community. So basically they are also permitted to provide reservation
of specific minority communities even more than 50%, 60% in whatever ratio they want. And no, and also they are not required, basically they are not required to maintain, to implement reservation for SC, ST and OBC. Basically let us consider one example. मान लो आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, आपके पास पूरा राइट है कि आप एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, आप जो है लैंग्वेज या रिलीजन के बेसिस पे आप कोई भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप अपने रिलीजन्स के लिए रिजर्व सीट कर सकते हैं, और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे किसी भी प्रकार का SC, ST और OBC का ऑब्लिगेशन नहीं लगेगा। क्लियर है ये बात? अब सवाल उठता है भाई कि आपने कहा कि रिलीजन और लैंग्वेज ये केवल दो ही क्राइटेरिया होने चाहिए जिस पे ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगी, जिस ग्राउंड पे आप माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यू कैन इस्टेब्लिश। अब आपने एक बात और कही कि भाई हो सकता है कि बहुत से लोग सेकुलर हों जो कि किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करते हों, और अगर उन्होंने अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया टू प्रोवाइड द एजुकेशन, टू प्रोवाइड द मॉडर्न एजुकेशन, बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस फैकल्टी, साइंस बैकग्राउंड, so if they are trying to do so, then what about them? So then reservation will be applied. That's the basically case. Now these are the advantage which has been given to the, and also more advantage has been given to the minority education institution. So basically they have also not to maintain 23% reservation to the ST and ST community. They have also not implement, they are free from any type of reservation regulation. So basically they are free from any type of reservation regulation. But also states that state cannot acquire compulsory property of minority educational institution. सपोज करो भाई आपने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया है जो कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का टैग जिसको मिल जाता है, तो अगर सरकार को प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, मान लो किसी भी रोड से हाईवे जा रहा है और उस हाईवे के पास में माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रास्ते में पड़ रहा है, तो स्टेट कैन नॉट कंपल्सरी एक्वायर. If they are acquiring, then they have to rebuild minority educational institution in another place. So basically, state cannot acquire if minority educational institution denied to give the property, then they are duty bound to not acquire the property of minority educational institution. So these are the basically status which has been advantage which has been given to the minority educational institution. Now let us discuss who will decide minority status. Who will decide minority status? So basically, I have already told you minority in our constitution has been decided on two bases. First is language, second is religion. So basically, minority is divided on the basis of language and also on the basis of religion. These are the only criteria on which minority is decided. What is minority? Minority basically, if your population is less than 50% on the basis of language or on the basis of religion, then you will be considered as minority. Now,
How to determine the minority status? So basically, for the linguistic criteria, if any, for determining linguistic minority, state government can do it by an simple order of governor. Now, for determining the religious minority in 1993, union government order declares Muslim, Sikh, Christian, Parsi, Buddhist are minority at state level. Now, Jainism is also a part of that. So basically, plus you can also add Jainism is also got religious minority status. Only one community is in majority, that is Hindu. Now, in the recent cases, Union government stated in the recent year, Union government states that state government can also identify and notify religious minority within their jurisdiction, and allowing such group to set up minority education institution. So recent year, Union government also stated that state government has also the authority and also have the power to identify and notify the माइनॉरिटी स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. बेसिकली लैंग्वेज के बेसिस पे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले से ही पावर थी कि भाई वो किसी भी स्टेट के अंदर जो भी लैंग्वेज की माइनॉरिटी है उसके बिहाफ पे वो उस माइनॉरिटी को डिक्लेयर कर सकते थे, और उस लैंग्वेज की माइनॉरिटी की डिक्लेयर करने के बाद उस माइनॉरिटी के पास अथॉरिटी हुआ करती थी कि भाई आप माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश कर सकते हैं. लेकिन रिलीजन के बेसिस पे केवल केवल यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर थी, और यूनियन गवर्नमेंट ने 1993 में ये कहा भी कि कि जो है मुस्लिम, सिख, जैनिज्म एंड पारसी एंड बुद्धिस्ट एंड सिख, दे आल्सो गॉट Christian, they also got the minority status on the basis of religion. Now union government also stated that state government also notify and meet and identify the religious minority, and allowing allowing them also to set up their minority educational institution. So this is the criteria. Now, so these are the argument which has been made under the this is the basic basis on which minority educational institution or minority status has been drawn. Now let's move forward and discuss important judgment with respect to minority educational institutions. So what are the various judgments? So basically, let us discuss important judgment of Supreme Court with respect to minority educational institution.
So basically, a case has been gone in the Supreme Court with respect to St. Stephen's College that is situated in the Delhi University. So first case has been gone to Supreme Court in the case name of St. Stephen's versus Union of India. In this case, Supreme Court states that cap of 50% limit on the reservation on the merit reservation for minority community status. What is happened basically? क्या हुआ था मैं बता देता हूँ. सेंट स्टीफन कॉलेज जो है उसमें क्या हुआ कि भाई सेंट स्टीफन कॉलेज जब एडमिशन लेता था तो वो 50% लिमिट को ब्रीच कर जाता था. कैसे कि भाई क्रिश्चियन लोगों को वो 50% से ज्यादा एडमिशन ले लेता था. तो ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये एक यूनिवर्सिटी है, ये एक कॉलेज है जो कि डीयू के अंडर में आता है और ये गवर्नमेंट द्वारा मेड है. तो ये कैसे 50% लिमिट को ब्रीच कर सकते हैं. तो a case has been gone to Supreme Court and Supreme Court stated that they have limit. So basically Supreme Court imposes 50% cap on merit reservation for minority community. भाई क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है, ठीक है. सेंट स्टीफन गवर्नमेंट का फंड भी लेता है और सुप्रीम भाई गवर्नमेंट का फंड ले रहे हो और आपने माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं अपने आप को बनाया है तो आप कैसे 50% लिमिट को ब्रीच कर सकते हैं. नहीं कर सकते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड they have imposed 50% cap on the merit reservation for the minority community. Now in another case, TMA Pi versus state of Karnataka. Again, Supreme Court relaxes the limit of 50% cap in above case. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिवर्स किया और उन्होंने इस 50% के लिमिट को रिलैक्सेशन दे दी. एंड हु विल डिसाइड दिस रिलैक्सेशन, एंड ये पावर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी. सो बेसिकली एंड देयरफॉर नाउ कैप ऑफ लिमिट will decided by state government. तो भाई एक अनदर केस में टीएमए पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये 50% लिमिट जो है वो अपन हटाते हैं और कितनी लिमिट होगी ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ना कि यूनियन गवर्नमेंट. सो दैट हैज बीन said by the Supreme Court in the case of TMA Pai versus state of Karnataka. Now in another case, PA Inamdar versus state of Maharashtra. In the case of PA Inamdar versus State of Maharashtra, Supreme Court stated no reservation to other community in minority educational institution under Article 2015. Basically, Supreme Court ने कहा कि भैया ऐसा है SC ST OBC को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा. कहाँ नहीं मिलेगा? माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में. कैसे? मान लो मुस्लिम कम्युनिटी एक किसी क्रिश्चियन ने अपना माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश किया. अब SC ST अगर वहां पर अप्लाई करते हैं कि भाई मेरे को रिजर्वेशन दो उस इंस्टीट्यूशन में, तो सुप्रीम तो ये
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिनाई कर सकते हैं कि भाई मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्यों नहीं दोगे? देन सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड बिकॉज दे आर already aimed to provide educational to provide education to minority। भाई वो तो बने ही माइनॉरिटी को एजुकेशन देने के लिए, और उनमें भी तुम रिजर्वेशन मांग लो। बड़े यार आदमी खराब हो तुम। एक तो वो माइनॉरिटी के लिए बने ही हैं, और तुम उसमें भी रिजर्वेशन मांग रहे हो कि भाई मेरे को भी पढ़ना है उसमें। क्यों भाई? दम है तो बिना रिजर्वेशन के जाओ, एडमिशन ले लो, पढ़ो जाके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि भाई आप जे और एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा के ले गए, भाई ये लो मेरे को रिजर्वेशन दो, ऐसा नहीं होगा। एससी एससी का सर्टिफिकेट लगा के चले गए, भाई रिजर्वेशन दो, ऐसा नहीं होगा। सो इन द केस ऑफ पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, नो रिजर्वेशन टू अदर कम्युनिटी in minority education institution under Article 85, basically because they are already serving the purpose of minority educational minority to provide education to the minority. So this is the status, and Supreme Court also stated that right to administration in the case right to administration minority educational institution does not mean misadministration। भैया ऐसा है, सुनो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वालों, तुमको अधिकार तो मिला है, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का अधिकार नहीं मिला है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन निगेटिवली रूप से करें। आपको अधिकार मिला है कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं, लेकिन यू हैव नॉट गॉट द राइट टू एडमिनिस्टर टू मिड एडमिनिस्ट्रेशन, टू मिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एंड सुप्रीम कोर्ट also stated if you are getting if you are getting or if minority educational institution are getting any type of state fund or donation by donation, then state can interfere। ऐसा है भैया, पहले तो आप मिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप डोनेशन ले रहे हैं, अगर आपके पास स्टेट फंड आ रहा है, तो स्टेट जो है उसमें इंटरफेयर कर सकती है। तो ये तो भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट ने कहा। Now, what about the case of Aligarh Muslim University? So the case has been gone in the Supreme Court. Now let us discuss about the Aligarh Muslim University case, AMU case. So now, Supreme Court stated in the Aziz Basu versus Union of India, Supreme Court stated Aligarh Muslim University is not a minority educational institution. So basically, AMU is not a minority educational institution because, क्यों भैया ऐसा क्यों नहीं? बिकॉज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट मेड बाय फॉर एनी पर्टिकुलर सोसाइटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज मेड बाय पार्लियामेंट्री लॉ, like as Delhi University, like as Banaras Hindu University, like as Hyderabad University. So in the same behavior, Aligarh Muslim University is also made. So because AMU is made by parliament law. Now, in the response of this,
Parliament made law and overturned the judgment of Supreme Court. और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पार्लियामेंट ने लॉ बना के खत्म कर दिया। ले भाई, हाँ, तो क्या कहा पार्लियामेंट ने? पार्लियामेंट ने कहा भाई कि ये जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये है सेम इज द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगेन हाई कोर्ट ने क्या किया, इस लॉ को हाई कोर्ट डिक्लेयर दिस लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लो भाई, फिर से, तो हाई कोर्ट ने फिर से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। नाउ अगेन केस हैज बीन गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट। एक केस फिर गया सुप्रीम कोर्ट में। अगेन सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड एंड लेड डाउन, सुप्रीम कोर्ट laid down threefold test for determining minority educational institution. What is the threefold test? That is the basically important. The threefold test basically, first is genesis, second is purpose, third is funding. What do we mean by genesis? Basically threefold test में क्या है कि भैया जिस इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप बनाने जा रहे हैं, उसकी नींव किसने रखी, उसका पर्पस क्या था, उसको फंडिंग कौन करता है। तो बेसिकली हु थॉट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सो हु थॉट फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। भैया पार्लियामेंट ने थॉट किया है कि भाई पार्लियामेंट बनाएगी, तब तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है वो। किसी मुस्लिम कम्युनिटी ने अगर थॉट किया होता कि भाई इस थॉट के अनुसार ये इंस्टीट्यूशन बनेगा, तब तो एक साथ चांसेस थे, लेकिन इस पे चांसेस नहीं है। अब चलो किसी के विचार में आया कि भाई इसको इंस्टीट्यूशन को बनाना है, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी केस में तो मदन मोहन मालवीय की थॉट थी कि भाई ये बनेगा कॉलेज। तो ऐसे थॉट किसकी थी, किसके मन में आया, वो जेनेसिस है। एंड क्या पर्पज है, सो बेसिकली was minority educational institution established to serve interest of minority। तो भाई जब ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा था, उस समय क्या उसका पर्पस यही था कि माइनॉरिटी को ही ज्ञान देना है, माइनॉरिटी को ही एजुकेशन देना है? भाई तब तो पर्पस होना चाहिए ना, कि जब चलो आपने बनाया तब तो आपने पर्पस आपका ये नहीं था। लेकिन आज आप कहने लगे कि भाई माइनॉरिटी को स्टेटस दो इसको, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपका पर्पस क्या था बनाने के समय? तब आपका क्या पर्पस था कि आप माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पर्पस से बना रहे हैं? So that's the basically. Now in the third point, who provide funding? आपको फंड कौन कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर था। तो ये तीन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया लेट डाउन कर दिया कि भाई ये तीन फोल्ड टेस्ट लगेंगे जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करेंगे तब। So that is the basically threefold test which has been laid down by the Supreme Court of India. Now we have discussed Article 29, Article 30 of the Constitution of India. Supreme Court laid down threefold test: genesis, purpose, funding. किसने सोचा, किसका क्या पर्पस था, कौन फंड करता है। Now we have done with the Article 29 of the Constitution of India. Now let us discuss about Article 32 of the Constitution of India. So we have discussed Article 29 and 30. Let's revise it once again. Article 29, it's talk about protection of, one second.
Okay. So Article 29 talks about protection of interest of minority. Basically, any section of citizen have the right of India have the right to conserve their language, to conserve their culture, and also to protect them. And Article 29 Clause 2 says that no discrimination with respect to admission in any educational institution with respect to on the ground of language and religion and race, caste, and language. And Article 30 talks about minority educational institution on the basis of language and religion. They have a right to establish and maintain educational institution of their own choice. Now, what is the special advantage which is given to the minority educational institution? They have more autonomy than other institutions. They are permitted to provide reservation for their specific minority community. They are not required to implement the SC, ST, OBC reservation in their colleges. They are free from any type of reservation regulation. State cannot acquire compulsory property of minority educational institution. Now, who will decide the status of minority community? So, initially, on the basis of language, state government has the power to issue governor order by simply giving the governor order to declare any to any minority as the minority status on the basis of language and for the religion. In the 1993 Supreme National Union Government by order has declared Muslim, Sikh, Sikh, Christian, Jainism, and other religion as the minority community status on the basis of religion. Later, government said the state government has also authorized to make any uh, community as the minority community on the basis of religion. Now, Supreme Court judgment on the minority education institutions. So, in the case of St. Stephen versus Union of India, Supreme Court limits and imposes the 50% cap on the reservation. In the TMAPI case, Supreme Court reversed its decision and gave the power to the High Court to limit the cap. And PA Inamdar versus State of Maharashtra, they have said that no reservation in the community is basically no reservation for the SC, ST, OBC in the minority education institution because they are already serving the purpose of minority. Now, right to administration and Supreme Court also stated that भैया ऐसा है आपको पावर मिली एडमिनिस्ट्रेशन करने की तो आप इसको मिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं और अगर आप किसी प्रकार का डोनेशन या पब्लिक फंड लेते हैं तो स्टेट जो है आपके इंस्टीट्यूशन में इंटरफेयर कर सकती है व्हाट अबाउट द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस में अजीत बासु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है क्योंकि ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है और इसके इसके रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट ने लॉ पास किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अगेन माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया तो पार्लियामेंट फिर हाई कोर्ट ने फिर अगेन दिस लॉ को नलीफाई कर दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास ये जब केस गया तो उन्होंने 3 फोल्ड का टेस्ट रख दिया कि भाई इस टेस्ट को पास करो तो आप माइनॉरिटी स्टेटस ले लोगे अब 3 फोल्ड का टेस्ट क्या था कि भैया पहला जेनेसिस दूसरा पर्पस तीसरा फंडिंग कौन करता है जिसने थॉट किया उसकी थॉट क्या थी क्या पर्पस था बनाने का और फंडिंग कौन करता है तो दीज आर बेसिकली गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट in the Aligarh Muslim University case, and it gives the threefold test of the constitution of the giving or of declaring any institution as the minority educational institutions. Now we will discuss the writ of the Constitution of India, writ of the Supreme Court in the next class.